morning, dear student. Let's start today's class. Today we will discuss about the preparation of aldehyde and ketone by ozonolysis of SIS, ozonolysis of alkene. Means in this method we will prepare aldehyde and ketone from alkene. हमें यही method रे alkene रू aldehyde और ketone prepare करिबा. Alkene means carbon carbon double bond. If I am saying alkene, the meaning is that is your carbon carbon double bond. If is there, then we say that is an alkene. So we will take this alkene and we will prepare aldehyde and ketone from this alkene. So here you have to remember that when I am saying ozonolysis of alkene, ozonolysis, if you break this word, means lysis in terms of ozone. Lysis means breaking, means we will break this carbon carbon bond by the treatment of ozone. এটা হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট। তা মানে কোন হলা এই মেথডে আলকিন সহিত ওজোন র রিঅ্যাকশন করা যায়। So in this method ozone is added to alkene and the solvent is taken here carbon tetrachloride CCl4 solvent এই জায়গায় নিয়া যায় আর CCl4 solvent নেই কি এই জায়গায় alkene ru alkene ro প্রথমে ozonolysis করা যাব মানে প্রথমে alkene রে ওজোন এড হেবো কাহা প্রেজেন্স রে CCl4 প্রেজেন্স রে কোন বাহারিব প্রোডাক্ট দেখো the product is a form is an ozonide जो प्रोडक्ट बाहर है ताकू हमें ओजोनाइड कहिबा a ozonide is formed. Now how to write the structure of ozonide, that is most important and little bit tricky also. तो केंति लिखबो सेटा देखो ए डबल बॉन्ड रहिबो नाही, this double bond will not be there, a double bond रहिबो नाही because double bond is going to break. Now what is that? C and with this C R and H is attached and to this C also R and H is attached. A double bond रहिबो नाही बडी गला कोन ए कार्बन रहिला ए कार्बन सहित R लागिछि आ H लागिछि मु जेंति लिखिबि सेंति लिखिबो C सहित सिमिलरली R लागिछि H लागिछि. Now to this two carbon 3 oxygen are added. ए जो तीनटा कार्बन रहिला तीनटा ऑक्सीजन ता सहित ऐड हो केंति देखो जस्ट लाइक ए टेंपल पुरे मंदिर भलिया करतबो एटा मंदिरर ग्राउंड हे गला ये मंदिरर पिलर हे गला ये मंदिरर मुंडी हे गला जस्ट टेक्निक एक्चुअली प्रत्येक ऑक्सीजन रो मते दुईटा बॉन्ड करिवार अछि तो सब ऑक्सीजन रो दुईटा बॉन्ड हे गला कार्बन रो चारटा बॉन्ड हे गला सो ए जो कंपाउंड तयारी हला दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड. टेक्निक बोले नाइला डबल बॉन्ड को देखिबो नाही कार्बन RH कार्बन RH कार्बन RH कार्बन RH ए कार्बन से जहां लागी दिबो सेले देखि देबो डबल बॉन्ड जागा रे तीनटा ऑक्सीजन एते आके रखि देबो मंदिर वाले रखि देबो तार ग्राउंड पिलर तार मुंडी बाहरी गला ठीक अछि. So this ozonide is formed now. Now to this ozonide zinc dust and water is added. माने सेही ozonide रो हाइड्रोलिसिस हबो in presence of zinc dust or that ozonide will break. सेही ozonide भांगिबो तार ट्रिक कोन देखो very simple. This oxygen will be separated from both this carbon. सेही ऑक्सीजन दुई कार्बन को सेपरेट हे जिवो आउ वाटर सहित से ऑक्सीजन मिसि जिवो माने ए ऑक्सीजन मिसि जिवो वाटर सहित माने बाहरला कोन बाय प्रोडक्ट आकारे बाहरला H2O2 H2O बाहर गला बड़ी गला कोन देखो R C actually this bond is going to break ए जो भांगिली माने करा ए बॉन्ड ए जाय को आसीबो सो R C double bond O H concept बुझो R C this bond is coming to here R C double bond O H so you are getting an R C double bond O H. Similarly what you got from this side actually it breaks in a cyclic way A bond ए जाय को आसी भांगिबो A bond ए जाय को आसी भांगिबो A bond ए जाय को भांगिबो एंती मेकानिज्म करबा दरकार नै तुम बिंदु आराम से प्रोडक्ट लिखि पारिबो किंती हबो बॉन्ड ए जाय को आसीबो R C double bond O H. Now this one is coming to here and this one is break so what is formed here R C double bond O H खाली एटा डबल बॉन्ड O खाली हे जाउछि R C double bond O H जेतु दिने समान मानि तबे 2 लिखि देले भी चलिबो बट अलग अलग लिखि कि देखिले भूल हबो नाही भूल हबार चांसेस भी नाही बुझी पारला समझती. तो
जे कोनोसी भी अल्किन रे ए टेक्निक हमें अप्लाई करि परिबा वी कैन अप्लाई दिस टेक्निक टू एनी अल्किन टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द प्रोडक्ट कोन हबो पाइबा पई हमें ए मेथड रे जे कोनोसी अल्किन रु एल्डिहाइड कीटोन तयारी करि परिबा So what is done in this method? Alkene is added to ozone or ozone is added to alkene in presence of CCl4. A ozonide is formed which undergo hydrolysis in presence of zinc dust to give aldehyde or ketone depending on the nature of alkene. से को प्रकार aldehyde बाहरिबो बा को प्रकार ketone बाहरिबो से ए alkene रो नेचर ऊपर डिपेंड करिवो alkene रो नेचर ऊपर डिपेंड करिवो माने कोन सपोज योर alkene is like this CH2 double bond CH2 तारे एई जगह रे की प्रोडक्ट बाहरिबो व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट हियर चला करा जाऊ O3 ऐड करिबा O3 ऐड कला परे प्रथम कोन लिखा जिवो ओजोनाइड लिखा जिवो सो व्हाट विल बी द ओजोनाइड हियर कार्बन H कार्बन H three oxygen just like the temple of each oxygen will have two bonds. Now this will break in presence of zinc dust and water. Zinc dust or water presence will break up. Medium में CCl4 रहेगा. In the medium you will have CCl4. Now how to find out what will be the product? This bond will come to here. This will be separated and this will be separated. This oxygen will go with water. So you have the byproduct H2O2 and what will be the product? H C double bond O because this bond is coming to this bond. So H C double bond O H means you are getting formaldehyde, one formaldehyde from this side and also you are getting formaldehyde from this side also. H C double bond O H C double bond O H. तो की प्रकार का कार्बोनिक कंपाउंड बाहरिबो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अल्कीन से नेचर ऑफ अल्कीन डिसाइड करिवो के प्रकार सीटू बाहरिबो जे एल्डिहाइड किबा कीटोन सपोज योर अल्कीन इज लाइक दिस CH3 CH double bond C CH3 CH3 then in this case what will be the final product how to know you can just go through the procedure देखि जाई परिबो O3 ऐड कलो CCl4 देलो ताले इने ओजोनाइड बाहरिबो कोन this carbon is attached to CH3 and hydrogen so ए कार्बन सहित CH3 लागिछि आ हाइड्रोजन लागिछि clear then this carbon is attached to 2 CH3 this carbon is attached to 2 CH3 this carbon is attached to 2 CH3 and this oxygen are added just like a temple oxygen मंदिर ओडिया ऐड हेछि clear सब ऑक्सीजन दुटा बन रहिबो तापरे कोन हो देखो zinc dust how water presence रे in presence of zinc dust and water presence रे ए ओजोनाइड रो ब्रेक हबो zinc dust and water H2O presence रे ये सेपरेट हे जिवो आ ये सेपरेट हे जिवो तो H2O से ये मिसी की H2O2 बाहरी गला बाय प्रोडक्ट आकारे ता संगे कोन बाहरिबो एल्डिहाइड कीटोन CH3 C double bond OH because this bond will come to this bond so CH3 COH so you are getting an aldehyde similarly from this side also you will get CH3 this bond is coming this bond is coming to here and this bond is break means CH3 C double bond O CH3 एटा साइक्लिक रे भांगु जेबो मने मेकानिक देखे देछि तो डायरेक्टली तुम इमीडिएट कहि परिबो CH3 C double bond O CH3 आसीबो CH3 C double bond O CH3 means you are getting an acetaldehyde as well as you are getting acetone देखो acetaldehyde भी पाइलो acetone भी पाइलो तो को प्रकार रो एल्डिहाइड कीटोन बाहरिबो that depends upon the nature of alkene से alkene रो नेचर डिसाइड करिवो को प्रकार रो एल्डिहाइड कीटोन बाहरिबो देखो एटा तो गला 2 मार्क के क्वेश्चन पड़ले एते डिटेल लिखिबो तो मैं याकू देखि कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कोन होबो कोइ परिबो आराम से केनते आबे सिंपली डबल बॉन्ड को भांगी दबो आ ई कार्बन डबल बॉन्ड O ई कार्बन डबल बॉन्ड O लगे दबो दैट्स इट इटा डायरेक्टली उडे पिला कहि परिबो जे फाइनल प्रोडक्ट कोन आसीबो सपोज योर अल्कीन इज लाइक दिस CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CCH3 CH3 मते क्वेश्चन पचाला ए कंपाउंड रो ओजोनोलेसिस प्रोडक्ट कोन होबो आई कैन डू इट डायरेक्टली किछि करबी नाही सिंपल कोन करबी ए डबल बॉन्ड सब देखिबी नाही I will not write this double bond and I will put just double bond O here and double bond O here. This is my final product. तो product कोन हम देखो ए डबल बॉन्ड को जदि हम लिखिबा नाही तले कोन रहला CH3 C ACC तो कोन रहबे डबल बॉन्ड O रहिबो तापरे ACH3 रहला. This is one product acetone got. Similarly from this side also same thing CH3 C double bond O रहिबो नाही double bond O और double
CH2 रहिबो सो एमती डायरेक्टली देखि कि गुटे पिला प्रोडक्ट लिखि पारिबो फाइनल प्रोडक्ट कोन होबो लिखि पारिबो किंतु दी मार्क के क्वेश्चन यदि पड़ला पूरा एमती ओजोनाइड फॉर्मेशन करी कि तुम लिखिबो डायरेक्टली लिखिबो नाही तुम ए रिएक्शन को भी निजे कंप्लीट करिवो पूरा डायरेक्टली कहि दिछि बट निजे कंप्लीट करिवो क्लियर व्हाट इटा हला इथिन तो जेते बेला हमें इथिन को लेकी ओजोनोलाइसिस करूछु फाइनल प्रोडक्ट बाहर छि फॉर्माल्डिहाइड or 2 mole of formaldehyde you are getting. But when we are doing ozonolysis to 1, 2, 3, 4, 2 methyl bute 2 ene, हमें जब 2 methyl bute 2 ene रो ozonolysis करूछे सेही समय रे हमको acetaldehyde और acetone मिलुछि. So यार थ्योरी कोन हबो 2 methyl bute 2 ene on ozonolysis or on addition of ozone in presence of CCl4 followed by treatment of zinc dust and water gives acetaldehyde and acetone. Acetaldehyde एवं acetone देबो बुझी पारला समझते ठीक से कि ए जगह रे भी ethene on addition of ozone in presence of CCl4 a ozonide is formed which is break in presence of zinc dust and water to give formaldehyde. क्लियर हैला समझते क्लियर हैला ई मेथड रो थ्योरी कोन हबो तो जनरल थ्योरी लिखि दोछि लेखो alkene on treatment with ozone or on addition with ozone alkene on addition with ozone or on treatment with ozone in presence of CCl4 or carbon tetrachloride in presence of CCl4 or carbon tetrachloride in presence of CCl4 or carbon tetrachloride a ozonide is formed a ozonide is formed which is break in presence of zinc dust and water which is break in presence of zinc dust and water to give aldehyde or ketones depending on the nature of aldehydes or ketones depending on the nature of alkene taken depending on the nature of alkene taken आमे को प्रकार alkene नेइछु से डिसाइड करिवो जे को प्रकार aldehyde किबा को प्रकार ketone बाहरिवो got it all clear on this okay let's do another reaction or another method of preparation ए जगह alkene तो सरी गला एबे हमें आउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन करिबा एंड दैट एक्चुअली alkene को लेके मु आगर क्वेश्चन दे दोछि ए alkene रो ozonolysis को लेके नाउ यू विल फाइंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट कोन होबो तुम प्रैक्टिस करबो समझते एतकी क्वेश्चन पचार जाय बट एंट्रांस से पचारि पारे सपोज यू आर गिवन क्वेश्चन लाइक दिस एथरे गुड अल्कोहल कांसेप्ट यूज होबो तो सेति पय समस्त ध्यान देथिबो सपोज मैं एथरे क्वेश्चन दोछि अल्कोहल केवल देखिबो यू विल राइट द प्रोडक्ट ताकू ओजोनोलाइसिस करबा पई कहिछि प्रोडक्ट कोन बाहरिबो लिखिबो what will be the product I am asking here complete the reaction by eta hala a अछि और b अछि तो identify a and b जदि करी हमरे मु सॉल्व कर देलिया ऑप्शन हमरे दे दोछि ऑप्शन a देखि और b देखि ऑप्शन ए रे सपोज ऑप्शन बी
क्वेश्चन दोषी एटा एग्जाम रे क्वेश्चन तमे जे आराम से कर पाए यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ ऑप्शन सी क्वेश्चन दे दोछी देखिबा को स्टूडेंट करि पारुछि जे प्रॉपर्ली बुझितिबो से आराम से करि पारिबो जे अल्कोहल की बुझितिबो ठीक से because you need here the help of alcohol also option D non derivative तो बड़ा नीचे टाइप करके लिखिए you will solve this question एमके आगे एंट्रेंस रे क्वेश्चन आसे एक क्वेश्चन में मार्क में भी एंट्रेंस से 4 मार्क भी देता डजंट मैटर 4 मार्क भी दे पारे देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 4 मार्क ही गला काना पिला केटी अल्कोहल भी जानते बार अछि और एडेड टू प्रिपरेशन भी जानते बार अछि ठीक अछि सो यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एयर क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस टाइम देछि लेट्स सी द स्टूडेंट्स who could answer this question क्या आंसर दे बार देखियो नेक्स्ट वी विल डिस्कस प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइन एबे हमें अल्काइन रो प्रिपरेशन करिबा वी विल डू द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम अल्काइन अल्काइन यदि कहिला ता माने कोन इफ यू आर गिवन अल्काइन मींस यू आर गिवन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तुमको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिया हेची अल्काइन माने कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो सपोज हमें ए मेथड रे कोन करिबा लेट्स सी वी विल स्टार्ट फ्रॉम एसिटिलीन एसिटिलीन रो हम स्टार्ट करिबा लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम एसिटिलीन A C E T Y L E N E that ethyl लिखियो करिबा यू कैन आल्सो राइट इथाइल अदर कॉमन नेम होची एक्चुअली एसिटिलीन सो एसिटिलीन रे रू हमें अल्काइन तयारी करिबा एक्चुअली इन दिस मेथड सिंपली वाटर इज एडेड ए मेथड रे वाटर ही ऐड करा जाय जैसे कि आपको हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन मेथड भी कहा जाए तो अल्काइन सहित हमें सिंपली वाटर को ऐड करिबा तापर कैटलिस्ट आकरे दरकार हमको 1% HgSO4 और मर्क्यूरिक सल्फेट and 1% HgSO4 you need and 42% H2SO4 ये कैटलिस्ट हमको दरकार पड़ेगा so water is added to alkyne in presence of 1% HgSO4 and 42% H2SO4 एटा ला कैटलिस्ट ए जगह रे वाटर रो एडिशन हेबो तो वाटर रो जतले एडिशन हेबो कोन हेबो एक्चुअली वन डबल बॉन्ड विल बी ब्रेक गोटे डबल बॉन्ड ब्रेक हेबो एंड दैट विल बी शिफ्ट टू दिस कार्बन और टू दिस कार्बन जेति मार्कोनी को अनुसार ए जगह रे वाटर रो एक्चुअली एडिशन हेबो H+ और OH- जो रहला से एमटी मार्कोनी को अनुसार एडिशन हेबो और जेहेतु ये कार्बन दुटा समान अछि तो जो गोटे कार्बन रे H ऐड हेबो ताले आनो कार्बन रे OH ऐड हेबो दिस इज एज सिंपल एज माने बिकॉज़ इफ दिस बॉन्ड इज कमिंग टू हियर ता माने ए कार्बन रे एबे पॉजिटिव चार्ज रहला और ए कार्बन रे एबे नेगेटिव चार्ज रहला सपोज हम एमटी जे शिफ्ट करे छी जे एमटी शिफ्ट करेबा बा इफ दिस बॉन्ड विल कम टू दिस साइड देन नेगेटिव विल बी हियर एंड पॉजिटिव विल बी हियर एटा बुझी पारो समझते तो सेति में ए कार्बन रे हाइड्रोजन ए कार्बन रे लागिवो ताले OH ए कार्बन रे लागिवो और OH जदि ए कार्बन रे लागिवो ताले हाइड्रोजन ए कार्बन रे लागिवो and as both the carbon are same that's why it is not immature that to which carbon what is attached जेतु उभय कार्बन समान अछि तो ए जगह रे मैटर करिवो नाही जे को कार्बन रे H और को कार्बन रे OH लागुची जार इच्छा जे जो कार्बन रे लगे परला सपोज मु जदि ई सीट देखेबी नाही ताले मु जे कोनो से कार्बन रे भी यहां भी लगे पारे सपोज ए कार्बन रे मु जदि H लगाइली ताले ए कार्बन रे मु OH लगाइली लेट्स नो इट यू नो बाय बॉन्ड ब्रेक हबो तो हेला कोन H बॉन्ड C ए कार्बन रे गोटे H मु लगाइली तापरे एबे और ट्रिपल बॉन्ड रहइबो नै डबल बॉन्ड रहइबो C ए कार्बन रे लागिबो OH ए कार्बन लागिबो OH and this carbon has already a hydrogen ए कार्बन पाखरे ऑलरेडी का हाइड्रोजन थिला you got this compound तमे ए कंपाउंड पाई गलो you can see here a double bond is there and OH is there that's why there will be ketoenol tautomerism will takes place ए जगह रे एबे ketoenol tautomerism हबो जोटा तो फर्स्ट ईयर रो आइसोमेरिज्म रे पढ़ा आइतला ketoenol tautomerism केमती हबो जस्ट रीअरेंजमेंट हबो केमती आकारे this double bond will come here and this bond will come here याको ketoenol tautomerism कहा जाए
This is called keto-enol tautomerism. देखो A bond A को आसीबो and this bond will come to this carbon. This bond will come to this carbon. माने ए कार्बन पाखरे भी नेगेटिव चार्ज रहिला आ हाइड्रोजन H इलेक्ट्रॉन देइछि माने H+ रहिला त माने ए कार्बन टा ए हाइड्रोजन को अटैक करिवो C- will attack to this hydrogen. Simply so ए हाइड्रोजन ए कार्बन को आसी के लागिथिबो माने हे गला कोन एटा CH2 थिला आ गुटे हाइड्रोजन आसी गला माने CH3 हे गला एबे एटे डबल बॉन्ड थिला सिंगल बॉन्ड हे गला आ एटी C डबल बॉन्ड OH हे गला. So this is how aldehyde is formed. एबे एसिड को हमें जब हाइड्रेशन करले से जगह तो कोन बाहरला 1 and 2 you can have this name will be ETHEN. इथिन एक नंबर कार्बन रे लागि छी तुम्हारा डबल बॉन्ड तो तुम्हें पोजीशन देवा दरकार नहीं अब एक नंबर कार्बन रे OH लागि छी पोजीशन देवा दरकार नहीं तो इथेनॉल पाइलो and this ethanol undergo keto-enol tautomerism. Keto-enol tautomerism, enol tautomerism, TAUTOMERISM tautomerism. This enol form तमे याको सिंपली कॉमन नेम आके enol कोइ परिबो. This enol form undergo keto-enol tautomerism to give aldehyde. अब ये aldehyde रो ना कोन होबो this aldehyde will be acetaldehyde. बुझि पाबा समस्त एसिटिलीन रू चलो हम एसिटोन कैरी करिबा CH3 C triple bond CH. Now in this case you will find both the carbon are not in the same environment. It will 343 Kelvin temperature भी लागे. In this case both the carbon are not in the same environment. एई जगह रे उभय कार्बन समान एनवायरनमेंट रे नाहंती. तो एठी केवल गोटे पॉइंट तुमको ध्यान रखबो पड़िबो बा मन रखबो पड़िबो. In this case that both carbon are not in the same environment. अब जेतु उभय कार्बन समान एनवायरनमेंट रे नाहंती तो एई जगह रे कोठी H और कोठी OH लागिबो that you have to stick. केमति आकारे को कार्बन रे पॉजिटिव चार्ज अधिक स्टेबल होबो देखो. If this carbon has an electron donating group means definitely positive charge will be more stable here. तो जदि ए कार्बन पाखरे पॉजिटिव चार्ज लागिला त ए कार्बन पाखरे कोन लागिबो नेगेटिव चार्ज लागिबो तो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड रो ब्रेकिंग ए भलिया ही हबो. इट विल नेवर लाइक दिस. और तुम जानि छ ऑलरेडी मु मार्कन कोर्स में कहला बेले ए कांसेप्ट कहि जो कार्बन रे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसी लागिबो सेठी पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल हबो. तो एठी जदि पॉजिटिव चार्ज लागिला ताले हमर OH माइनस आसी की कोठी लागिबो OH प्लस कोठी लागिबो OH माइनस लागिबो ए कार्बन रे H प्लस लागिबो ए कार्बन रे. एति कि तुम जानि गलो माने सफिशिएंट. जो कार्बन रे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लागिथिबो बा CH3 बा अल्किल लागिथिबो सेही कार्बन रे आसी की OH लागि. सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट देन ए इनोल लागि कोन हो CH3 बॉन्ड C ए कार्बन रे OH लागिला. This carbon has OH. Now this triple bond will convert to double bond. C गोटे H लागिछि आ गोटे H आसी लागिबो एठी. Now this will again undergo keto-enol tautomerism. So what you will found this bond will come to here and this bond will come to here. So what you will found keto-enol tautomerism होला पे कोन बाहिबो CH3 bond CH3 bond C. Now double bond O will be there. Double bond O. A double bond break हे single bond हेइबो CH2 C minus अछि H plus को अट्रैक्ट करबो तो CH2 रे H लागला CH3. So you got acetone. ए वजह आकर हम एसीटोन पाई परिबा. अगेन दिस enol undergo keto-enol tautomerism to give you acetone. Keto-enol tautomerism to give acetone. बुझी पाबा समस्ते एटा भी टेंपरेचर 343 केल्विन लागिबो. आराम से समस्ते लिखि पारबो. क्लियर सिंपल दिस इज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन. मु याद करि राखि दउची acetylene on addition of water in presence of 1% HgSO4 and 42% H2SO4 at 343 Kelvin a enol is formed. Simply ना जानि पारुन ताले a enol is formed लिखि दबो. और an enol is formed which undergo keto-enol tautomerism to give acetaldehyde. एटा होची सिंपल थ्योरी. आउ थरे कहि दउची acetylene on hydration in presence of 1% HgSO4 and 42% H2SO4 at 343 Kelvin an enol is formed. यदि ना जानि पारुन डायरेक्टली लिखि लो an enol is formed which undergo keto-enol tautomerism to give acetaldehyde. सेमति यार ना कोन यार ना होला propine. Its name is propine. So propine on hydration
in presence of 1% HgSO4 and 42% H2SO4 and enol is formed ता नाम जान लिख परिबो तमे and which undergo ketoenantiomerism to give acetone. I hope you all are clear on this in this reaction. You all clear on this reaction? So alkene preparation is completed and alkyne preparation is also completed. I hope there is no doubt on this. Clear? तो आज हमर तीनटा प्रिपरेशन सरी गलानी गोटे हलानी एल्डिहाइड एसिड क्लोराइड रु तापरे आगोटे सरला हमर अल्किन रु आगोटे सरला हमर अल्काइन रु हमें नेक्स्ट पुणी डिस्कशन करिबा ओके गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट and let's start today's class. Today we will discuss another methods of preparation of aldehyde and ketone, and today we will discuss about the preparation of aldehyde and ketone from alcohol. This is very easy one, as we have already discussed about this in the chemical properties of alcohol. And basically there are two methods from which you can prepare aldehyde and ketone from alcohol. One is your dehydrogenation method. One is your dehydrogenation method, and this method is very easy. What we do in this method? In this method, the different types of alcohol that are passed through red hot copper. Means for aldehyde you will take primary alcohol, and for ketone you will take secondary alcohol. So when primary alcohol that will be passed through the red hot copper, it will give aldehyde, and secondary alcohol when it will be passed through the red hot copper, it will give you your ketone. So let's discuss this method directly, because I have already explained it in the chemical properties of alcohol, so it will not take much time. Let's take a primary alcohol, CH3 CH2OH. This is a primary alcohol. So when this primary alcohol, it will be passed through red hot copper, you can say copper 300 degree centigrade, then what will happen? This hydrogen and the alpha hydrogen, remember the carbon, alpha carbon, the alpha hydrogen and this hydrogen, it will remove as H2, it will lose H hydrogen gas, and it will give CH3CHO. CH3C, one H is left here or one H is removed, so CH3CHO. So that's the aldehyde you got, CH3CHO. So what will be the theory? Ethanol on passing through red hot copper, it will give you acetaldehyde. Ethanol on passing through red hot copper, it will give acetaldehyde. Is it complete for all? Clear? So this is a primary alcohol. So primary alcohol if it is, then it will definitely give the aldehyde. मु तार example भी ए जगह रे कर देली. Now let's take one secondary alcohol. यार theory भी निजे लिखि परिबो. Secondary alcohol हमें जदि नेबा, let's take one secondary alcohol. Then isopropyl alcohol I am taking. Isopropyl alcohol. Now in this isopropyl alcohol, if you will pass it through the red hot copper or copper 300 degree centigrade, what will happen? The hydrogen and alpha hydrogen, these two hydrogen will lost as the hydrogen gas, or it will be removed at hydrogen gas, and then what will be left? CH3 C CH3, and there will be double bond O, because this hydrogen is lost, so there will be a bond between carbon and oxygen, because from both the atom one atom bond is lost. That's why it will be CH3 C double bond O and CH3. So you got acetone. What will be its theory? Its theory will be isopropyl alcohol, or isopropyl alcohol on passing through red hot copper gives acetone with the release of hydrogen gas. This is a very easy method, and we have already discussed it in the chemical properties of alcohol. Clear? Is it clear to all? Is it clear to all? Okay. Next we will discuss the another method from that alcohol itself, that is your oxidation method, or by oxidation of alcohol. By oxidation of alcohol. By oxidation of alcohol. By oxidation of alcohol. By oxidation method, that's we are saying. By oxidation method. Oxidation method रे आमे केमिति एल्डिहाइड और कीटोन तयारी करि परिबा. आ तुम जानिछो ऑक्सीडेशन मेथड रे ऑक्सीडेशन हेबा पई यू नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
you need some oxidizing agent. And what are those oxidizing agents that you know from that chemical properties? If you will recall, K2Cr2O7 potassium dichromate in presence of H2SO4, this is a strong oxidizing agent जहाँ acidified potassium dichromate कहवा आमे, KMNO4 and H2SO4 or acidified KMNO4, or in here you may be given OH minus also, means KMNO4 in presence of acid or KMNO4 in presence of alkali. These two are very very strong oxidizing agent. Even if nitric acid is also a strong oxidizing agent. Here I am giving you all these are strong. These are strong oxidizing agent. Remember, these are strong oxidizing agent. I will explain what will be the role of strong oxidizing agent. And also here two more reagents are there, that one is PCC and another one is Collins reagent. What is this PCC and Collins reagent? PCC means pyridinium chlorochromate. PCC means pyridinium chlorochromate. Pyridinium chlorochromate. Pyridinium chlorochromate means it is a mixture of CrO3, pyridinium, pyridine the structure jani thao, this is the structure of pyridine, this is the structure of pyridine, mane C1 2 3 4 5 carbon, hydrogen 1 2 3 4 5 hydrogen and 1 nitrogen. This is the structure of pyridine. So PCC is a mixture of chromate and pyridine, C5 H5N and HCl. This mixture pyridinium chlorochromate, full form dekho, pyridinium chlorochromate and Collins reagent. Collins reagent formula, Collins reagent means in the Collins reagent it is a mixture of chromyl chloride or chromium trioxide or chromate plus pyridine. If HCl is there, then it is called PCC, and if only your chromate and pyridine is there, then that is called your PCC. And these two are mild oxidizing agent. Mild oxidizing agent means what? Mild oxidizing agent means they are weak oxidizing agent. Why I am classifying two category of oxidizing agent, I will explain just later on. First, remember, oxidizing agent you can use all these. These are strong oxidizing agent and these are weak oxidizing agent. Got my point? These are strong oxidizing agent and these are weak oxidizing agent. Okay, all clear on this? This is the information I am giving you before going to the method, because you know you already know the method. What's the method that we have discussed? Suppose we will take primary alcohol. If we will take primary alcohol, then definitely it will give aldehyde. And now let's take here acidified potassium dichromate. We will take here acidified potassium dichromate, K2Cr2O7 H2SO4. What will happen? I have already explained. You will add nascent oxygen here. Then what will be the reaction? Hydrogen and alpha hydrogen and oxygen. Hydrogen, alpha hydrogen and oxygen, it will give water. And what will be left here? CH3, C, one hydrogen will be there, CH3, CHO. So you will get here acetaldehyde. Got my point? You will got here acetaldehyde. माने केमती आकारे ए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन आउ ऑक्सीजन मिसिकी वाटर हो जिवो आउ तमे एसिटाल्डिहाइड पाई जिवो. एटा आमे ऑलरेडी अल्कोहल रो केमिकल प्रॉपर्टीज रे पढी थिले. एंड आल्सो यू विल रिमेंबर मु सेही जगह रे तुमको कहि थिली, इफ or this, as it is a strong oxidizing agent, the oxidation will not stop at acetaldehyde. So what it will happen again? Again this acetaldehyde will be oxidized to acetic acid. Eta bujha hitala mone pako. This acetaldehyde will be again oxidized to acetic acid. Got my point? Why this is happening? Because this K2Cr2O7 H2SO4 या फिर KMNO4 H2SO4, these are strong oxidizing agent. So they will, what they will do after the formation of aldehyde, they will again oxidize it into acetic acid or into carboxylic acid. जो acetaldehyde तैयारी हैला
से आउ थरे ऑक्सीडेशन हेकी एसिटिक एसिड रे कन्वर्ट हो जिवो गॉट माय पॉइंट सो दिस इज द डिमेरिट ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यही मेथड रे कोन करबा को पड़िबो ताहाले if you are using strong oxidizing agent then what you have to do you have to separate the aldehyde by fractional distillation method माने aldehyde तैयारी हला परे एटी तुम हिट करूथबो बा सेई जगह रे aldehyde गैस हे की सेपरेट हेबा दरकार जदि aldehyde से कंटेनर रे रही गला जदि तुम aldehyde तैयारी हला परे ताको सेपरेट करू ना हो then that aldehyde will be converted to carboxylic acid because this is a strong oxidizing agent. So when you are using strong oxidizing agent you need to apply here a additional step that you have to separate the aldehyde formed by fractional distillation method. जो aldehyde तैयारी हैला हमको सेही aldehyde को fractional distillation method रे कंटेनर रु बा रिएक्शन वेसल रु सेपरेट करिबा को पड़िबो जदि आमे सेपरेट करिबा नाही ताहले हमको एट द एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलिबो but you need your aldehyde got my point so this is the problem with strong oxidizing agent but at the same time if you will use PCC or Collins reagent माने सेही इथानल सहित if I will use PCC or Collins reagent then it will be only oxidized into aldehyde से केवल aldehyde को oxidation हेबो because these are weak oxidizing agent so after oxidizing it into aldehyde they will be unable to oxidize it into carboxylic acid ताले निजे कुह जदि कुहा गला अल्कोहल रु aldehyde प्रिपेयर करो बोली कुहा गला ताले strong oxidizing agent better हबा ना weak oxidizing agent better हबा definitely your answer should be weak oxidizing agent because आमे जदि weak oxidizing agent नौछु ताले हमको fractional distillation method apply करिबा को पड़िबो नाही बुझी पारला समझते किंतु तुम जदि strong oxidizing agent नेबो ताहले तुमको fractional distillation method सहाय्य रे aldehyde को separate करिबा को पड़िबो बुझी पारलो तो तुमे जबले theory लिखिबो suppose you are writing with strong oxidizing agent then what you will write ethanol on oxidation with acidified potassium dichromate give aldehyde or give acetaldehyde which is separated by or which is separated from the reaction vessel or from the reaction mixture by fractional distillation method एटा जो लिखि दबो ताहले this is okay आ तमे जदि सेपरेट करूना हो बोली जदि मेंशन करूना कि बुक रे मेंशन करी नाही करिबा कथा जदि मेंशन करूना हो ता मीनिंग एटा भी बुझेला जे याको एल्डिहाइड रिएक्शन स्टॉप हेने एल्डिहाइड पुनी कार्बोक्सिलिक एसिड रे कन्वर्ट हे जैतिबो बट प्लस 2 स्टैंडर्ड पई पिला माने जे केवल एतकी भी लिखि दउचंदी ताहले चलिबो किंतु मन रखो तो टेक्निकली रॉन्ग हे जिवो कारण अल्कोहल रे जदि हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट देई देबा आ किसी बहुत समय तो हम छाडी देबा ताहले हमको एल्डिहाइड मिलिबो नाही इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड कॉन्सेप्ट बुझी पारलो तो सेति थ्योरी बेटर हम कौन लिखिले इथानल ऑन ऑक्सीडेशन विथ एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट ये नासेंट ऑक्सीजन कह जाए मन अच्छे इथानल ऑन ऑक्सीडेशन विथ एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट गिव एसिटाल्डिहाइड व्हिच इज सेपरेटेड बाय your fractional distillation method or which is separated from the reaction mixture by fractional distillation method reason बुझी पारलो काहे कि सेपरेशन करबा को पड़िबो otherwise the aldehyde form that will be oxidized to carboxylic acid clear but if you are using PCC then it don't need to separate means ethanol on oxidation with PCC it will give acetaldehyde एतिके लिखिले भी चलिबो not only PCC तमें कोलिन्स रिएजेंट भी नहीं पारिबो चाहे पीसीसी नियो किंबा कोलिन्स रिएजेंट नियो सी एल्डिहाइड रे ही ऑक्सीडेशन स्टॉप हेबो बुझी पारला समझते ऑल क्लियर ऑन दिस तमें याकू एमती लिखिले भी चलिबो खाली से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड कांसेप्टटा एथिरे तमें ऐड करि देले बेटर हेबो गॉट माय पॉइंट ऑल क्लियर ऑन दिस चलो हमें आउ किसी एग्जांपल करिबा आउ तुम ऑलरेडी मुझे जस्ट पीसीसी और कोलिन्स रिएजेंट कांसेप्ट कहबा ही याकू टिके एते टाइम देली नले आई डोंट थिंक इट नीड्स मच टाइम मते दरकार मते लागु नै जेटा तुम बेसी टाइम लागिबो बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल तुम पढिथिलो नाउ लेट्स टेक ए सेकेंडरी अल्कोहल आमे गुटे सेकेंडरी अल्कोहल नेबा से समान तुम लिखि देले भी चलिबो किछि असुविधा नै खाली जानि थाओ पीसीसी और कोलिन्स रिएजेंट विषय रे K2Cr2O7 H2SO4 आमे देबा ताहले कोन हबो प्रोडक्ट को इन दिस केस यू विल ऐड नासेंट ऑक्सीजन हियर आमे नासेंट ऑक्सीजन एठी ऐड करिबा कोन बाहरिबो हाइड्रोजन ऑक्सीजन
means oxygen hydrogen attached to oxygen and alpha carbon attached to hydrogen. These two hydrogen or alpha hydrogen and this oxygen, they will be lost as water, and it will give CH3 C double bond O CH3. बुझी पारला समझते, it will give you acetone. So यार theory बहुत सहज. Isopropyl alcohol on oxidation with acidified potassium dichromate gives acetone. आउ या को सेपरेट करा हला बोली न लिखले भी चलिबो. It is not need to necessarily the right that it will be separated. लिखि देले better, बट जे न लिखु जबी ताले मार्क कटिबो नाही कारण बुक रे एतकी ही देइची. Clear? एतकी बुझी पारला समझते how it is formed. Now let's take another example. Benzene CH2OH means you will say benzyl alcohol. Benzyl alcohol आमे K2Cr2O7 H2SO4 देबा कोन बाहरिबा प्रोडक्ट कोन जे K2Cr2O7 H2SO4 आमे देबा. What will be the product? What will be the product? K2Cr2O7 H2SO4 देला परे HH आमे एठी नासेन ऑक्सीजन ऐड करिबा HHO. HHO वाटर हे कि लॉस हला. वाटर बाहरला परे प्रोडक्ट कोन बाहरला बेंजीन C गोटे हाइड्रोजन लॉस हेची H आउ O. सो यू गॉट बेंजाल डिहाइड. मते लागु छी समस्त थ्योरी भी लिखि पारिबो. सो यू गॉट हियर बेंजाल डिहाइड. तमे बेंजाल डिहाइड एठी पाइलो. तो बुझी पारला समस्त एथि की. सो आई होप देयर विल बी नो डाउट इन दिस whether you may go to any one of this. You can write now. Another example I will take from book. Book रू आउ गोटे example देबी जोड़ा book रे देइछि. What will be the product? You will say CH3 CH double bond CH CH. Book रू गोटे example मु दउछि. I am just collecting one example from the book itself. देखा जाओ OH CHOH CH3. Now you are given here PCC or Collins reagent जहाँ भी दे पारे. What will be the answer? Answer कौन हबो? Weak oxidizing agent तो डबल बॉन्ड को से किछि करि परिबो नाही. तो कौन हबो प्रोडक्ट ए जगह सिंपली नासेल ऑक्सीजन ऐड हबो HHO. जहाँ शिखी जो सती खाली लिखि देबार अछि. खाली तुम जानि थिबा कथा जे PCC गोटे स्ट्रांग ऑक्सी और PCC गोटे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जदि जानि ना हो देन यू विल बी इन ट्रबल कारण एग्जाम रे PCC और कोलिन्स रिएजेंट लिखा हिथिबो. तो प्रोडक्ट कोन बाहरिबो वाटर लॉस हला एंड योर प्रोडक्ट यू ऑब्टेन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3. मन रहला एटा कीटोन बाहरिबो सेकेंडरी अल्कोहल अछि HHO. तो C double bond O CH3. Got my point? So now from alcohol also it is completed. From alcohol how can you prepare aldehyde and ketone? I hope you all are clear on this. You all are clear on this. आ गुटे मु कहि दउछि गुटे ओपनर ऑक्सीडेशन अछि. I don't think so it in syllabus but still let's discuss it. Opener oxidation OPPE NAUR ओपनर ऑक्सीडेशन. एटा स्पेशल रिएक्शन मते लागुने एटा सिलेबस रे अछि बट जानि थाओ. एई मेथड रे कोन करा जाय गुटे सेकेंडरी अल्कोहल को एनी सेकेंडरी अल्कोहल को एसीटोन सहित रिएक्शन करा जाय. ता सहित एसीटोन सहित एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड प्रेजेंस रे. का प्रेजेंस रे एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड प्रेजेंस रे. सॉरी एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड फॉर्मूला कौन हम CH3 whole 3 CO whole 3 Al. ये रिएजेंट है इंपोर्टेंट. CH3 whole 3 CO CH3 whole 3 T butyl group. This is you know this is your T butyl group or tertiary butyl group. ऑक्सीजन लागिवो whole 3 Al कारण एल्युमिनियम रो वैलेंसी 3. यार प्रेजेंस रे
जदि आम सेकेंडरी अल्कोहल को जदि कीटोन सहित रिएक्शन करैबा ताहले सेट बा एसीटोन सहित पर्टिकुलरली एसीटोन निया जाए जदि आम एसीटोन रिएक्शन करैबा देन वी विल गेट अनदर कीटोन फ्रॉम दैट आम आ गोटे कीटोन पाइबा कौन हम ये जगह सिंपली यही हाइड्रोजेन ये पाखक पलि आसो एवं यही हाइड्रोजेन ये पाखक पलि आसो सेकेंडरी अल्कोहल गोटे बाहरी जीवो देख वेरी सिंपल टेक्निक दिस हाइड्रोजेन विल कम टू दिस ऑक्सीजन एंड दिस हाइड्रोजेन विल कम टू दिस कार्बन सो व्हाट यू विल गॉट द प्रोडक्ट आर सी आर डबल बॉन्ड ओ रहिबो एठी प्लस सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CH CH3 OH माने यही मेथड रे तुम जेकोसी प्रकार कीटोन एसीटोन साहाय्य तैयारी कर एसीटोन निजे गोटे कीटोन है किंतु आम अदर हायर कीटोन तैयारी करि परिबा ए मेथड रे जेमती कि सपोज आर जगार मते देछि CH3 CH2 C CH3 H OH प्लस एसीटोन एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड रहिला एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड रहिबो CH3 होल 3 CO होल 3 Al ये रहिला रिएजेंट आंसर कौन हम प्रोडक्ट व्हाट विल बी द प्रोडक्ट दिस हाइड्रोजन विल कम टू दिस कार्बन and this hydrogen will come to this carbon so your product will be CH3 CH2 C double bond O CH3 प्लस सेकेंडरी अल्कोहल बाहर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बाहर मस्ट बुझीपार केमती हायर मेंबर कीटोन तैयारी करा जाई पाला गोटे एसीटोन साहाय्य सो दिस इज कॉल्ड योर ओपनर ऑक्सीडेशन मेथड मु कहूँ ये सिलेबस रे लिखी ना बट स्टिल तुम तुम नोट रे एंट्रांस में मेंशन कर देथिबो जण किसी भी हो पारे बिकज स्टेट ब्यूरो बुक रे जेहेतु देइछि मे भी केतेबेले को टीचर पचारि पारंती तो सेथिपाई तमे एई रिएक्शन टाको भी निजो नोट रे मेंशन कर देथिबो क्लियर हे गला समझते all clear on this from alcohol I hope you all are clear from alcohol all clear alcohol रो दुईटा मेथड जानी गलो गोटे हला बाय डिहाइड्रोजिनेशन मेथड आ गोटे हला तुमरो ऑक्सीडेशन मेथड गोटे हला डिहाइड्रोजिनेशन मेथड आ गोटे हला तुमरो ऑक्सीडेशन मेथड so I hope you are clear on all this thing okay